Hello, everyone, and welcome to the Outlook. This is chapter 5. So, we are in the fifth week. I thought I just started this just to see how things go. Till now, it has been a good response. I get messages from a lot of people as they wait for the Outlook uh, every week, which gives inspiration that people like what they see. It is also it also helps me in building better content. Uh, so I first of all thank everyone who watch these videos. Uh, Till now, analysis has been okay. We can't be perfect, but what aim is to build a trading plan for the next week so others can make use of it and take some meaningful decisions. Aim you should what you should do, how you should use it is that you should look at your own analysis first and then see if it agrees with your analysis. I have tried to make this uh, as I try to elaborate it as much as I can. So it's an effort which I hope you like in the coming weeks as well. Uh, so so we start today's video on how market has been looking. Uh, last 2 weeks have been chaotic, and a lot of people might have lost some money, some might have made a lot of money, depends on which side you are. So we'll try to find out where we are standing now. The world, almost everything has corrected. uh, US indices, the Asian indices, Nifty, Bank Nifty, everything has corrected quite a bit. Especially the tech Nasdaq has come down quite a bit. Uh, but they're coming to a place where it can be risky to go short here. That doesn't mean that it's the end of a downtrend. We don't know yet, but there are some signals of some kind of a base building format. Uh, so what happens in base building is that doesn't mean कि low नहीं टूटेगा. The low can break. Low, that is the low of last week, that can break, but there we can see on the tape that there's a lot of buying that is coming in at some those levels. Most people think that FIs are selling, DIs are buying, but that one figure which you think uh, that is not the complete story. Uh, and as our aim is to take short-term trades, short-term directional trades, sometimes non-directional as well, but last few weeks have been directional in nature. So aim is कि directional trades लें और direction अभी तो we are looking at shorter term. It's a step by step process. अभी अगर मैं कहूँ कि निफ्टी 20,000 जाएगी अगले साल या 14,000 आएगी, एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ऑप्शन 30-60 डेज से ऊपर ऑप्शंस नहीं है. तो अगर मैं आपको कहूँ 20,000 निफ्टी जा रही है दिसंबर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर निफ्टी की आप क्या कॉल ले लेंगे? तो दिस इज यूजलेस एनालिसिस, टू बी ऑनेस्ट. ये मैं लास्ट टाइम किसी स्पेसिस पे भी कहा था कि ये एक कॉफ़ी टेबल टॉक के लिए ठीक है कि ओके दैट्स फाइन कि ओके यहाँ चले जाएगी वहाँ चले जाएगी, बट फॉर अ ट्रेडर it's of no use. Yes, to get a overall trend कि हाँ आर वी इन अ बुलिश टेरिटरी और बेरिश टेरिटरी, यहाँ तक ठीक है, बट नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो आई एम नॉट मिक्स एंड मैचिंग कि लॉन्ग टर्म ये होगा एंड ऑल दैट. सो विल स्टिक इन दिस इन द आउटलुक, विल स्टिक विद what can happen next week, what are the levels. ज़रूरी नहीं है वो चीज़ नेक्स्ट वीक हो, शायद उससे अगले हफ्ते हो. मार्केट कभी कभी ट्रेंडलेस हो जाती है, तो शायद वो उस एरिया में थोड़ी देर एक हफ्ता रहे. बट ओवरऑल वी आर लुकिंग एट टारगेट्स एंड द ट्रेंड. सो लेट्स स्टार्ट. What will we cover today?
We'll cover Nifty as usual. We'll cover Nifty. We'll cover Bank Nifty, S&P 500, and Nasdaq. Then we'll cover two indexes, the Nifty Pharma and Nifty IT. Last week we covered the Nifty Metal Index, and I posted a screenshot that it has achieved the target. अगर आपने वो मिस कर दिया तो you can go back and see the previous weeks and week before that video. तो मेटल्स तो अपने टारगेट के पास है, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, शायद थोड़ा सी कंसोलिडेट करे यहाँ पे, बट फार्मा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो आई हैव एडेड फार्मा। आईटी सेम, अभी भी नास्डैक के साथ, जैसे नास्डैक ब्रेक डाउन कर रहा है और अब सपोर्ट्स के पास, एंड आईटी भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो आईटी भी विल डिस्कस दैट। आईटी के अंदर दो स्टॉक, विप्रो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक्यूमुलेट खुद किया 500 पे, आई थिंक 483 और चल रहा है, कोई नीचे आता है तो विल बाय मोर। LTI, I've been LTI and LTTS, I've been holding and I've been trading, tradable bounces देता है 90-100 रुपीज़ का, फिर नीचे नया लो लगाता है, तो we'll see how it goes. I think there was an announcement of a merger ratio भी, I think it has come with Mindtree, LTI and Mindtree. I think 73 to 100, every 100 Mindtree के साथ I think 70, anyone who's holding 100 Mindtree will get 73 LTI. उसके हिसाब से अगर क्लोजिंग प्राइस पे देखें तो 4630 या 40 समथिंग लाइक दैट, इतने पे, जहाँ पे प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, प्राइस आई थिंक 45 सी 4600 के नीचे है, विल टेक दैट, एंड मर्जर प्राइस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद ही वो न्यूज़ आई थी। रिलायंस बिन परफेक्ट इन रिलायंस, दैट अराउंड 2800 2840 की सेल थी, अब नीचे आ गया है, अब कहाँ बाय करना है। I posted that I posted one that I posted one video, one I tweeted that Reliance can be the savior, so, and the numbers have been good, so we can watch out for Reliance कि कहाँ से कहाँ जा सकता है, अब कल कहाँ पे खुले we don't know, but let's assume अगर वो इन levels पे ही खुलता है, but I gave a buy call on Reliance on Friday afternoon, mid afternoon, उस वहीं पे ही है जहाँ पे buy call दी थी I think, but numbers are good as I have heard. I haven't seen it, but I've heard the numbers are good. So we can see a move in Reliance, which can pull Nifty as well higher. And then last one is ITC that we'll cover for the day. सो दिस इज़ द फर्स्ट चार्ट ऑफ निफ्टी। जब मैंने ये पोस्ट किया था पिछले वीडियोस के अंदर, तो ये पैटर्न बन रहा था, रिबन ने इसको रेजिस्टेंस दिया 2 बार, उसके बाद फॉल ज़्यादा थी, तो मैंने एक लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक के वीडियो में मैंने कहा था कि इस दिस टाइम इट्स नॉट लुकिंग गुड, एंड पीपल आस्क्ड मी व्हाई आर नो यू नॉट अ बायर नाउ, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट, ऊपर की मूवमेंट स्लो है, अप मूव इज स्लो, डाउन मूव यहाँ पे ठीक थी, यहाँ पे अप मूव स्लो थी, कंपैरेटिव थी, इक्वल कह सकते हैं, but डाउन मूव was very fast, so some there was more selling than buying, so I was expecting कि if 816 वाली रेंज अगर ये ब्रेक डाउन कर जाती है, तो पैटर्न का पहला टारगेट 16340 है, और पैटर्न का आई मीन पैटर्न टारगेट 16340 है, अरीमा टारगेट 16480 और 16250 है। सो स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक भी हाई से उस वक्त नीचे था, और मैंने कहा था अभी रूम है नीचे का, एट दैट टाइम इट वाज 3728 एंड देयर इज रूम फॉर अ डाउन मूव, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। सो ये वही चार्ट है, यहाँ पे हमने देखा था, इसने इस पे रिस्पेक्ट किया, कंसोलिडेट किया, रिबन को नहीं क्रॉस कर पाई, रिबन रेजिस्टेंस था, एंड देन इट ब्रोक डाउन, फास्ट ब्रेक डाउन के बाद फास्ट मूव अप भी आया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। आई एम सेइंग इट फॉर अ फ्यू डेज नाउ कि जब तक रिबन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो आई विल नॉट बी बुलिश इन नीदर निफ्टी और बैंक निफ्टी, बट हम बॉटम पिकिंग कर सकते हैं इन अ वे दैट जहाँ पे टारगेट्स हैं वहाँ पे हम कुछ बाय कर सकते हैं बाउंसेस के लिए, यहाँ से दिस वाज नॉट अ बाय एरिया दो,
पर यहाँ बाउंस आया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर शॉर्ट है जब तक निफ्टी रिबन के ऊपर क्लोजेस देना शुरू ना कर दे। सो व्हाट हैपेंड वाज इट ब्रोक 16860, यहाँ से ब्रेक डाउन आया, यहाँ से फिर एकदम एक कैंडल में अप मूव आया। ये जो एक कैंडल वाले अप मूव्स होते हैं सस्टेन नहीं होते यूजुअली, उसके बाद बेस बिल्डिंग हुई क्योंकि इसके नीचे था, देयर इज नो लॉन्ग्स हियर। So again it broke and ये फर्स्ट टारगेट था 16480, 3-4 बार्स के अंदर ही वो अचीव हो गया। पैटर्न टारगेट था 1600, 16340, यहाँ पे भी एग्जैक्ट अचीव होके अब जो 16480 का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट यहाँ पे एक तो इसके बाद एक बार फिर ट्राई किया, यहाँ पे एक बार दो बार ट्राई किया क्रॉस करने का, wasn't able to cross, and then it broke down to 16,250, जहां से आई थिंक फ्राइडे को बाउंस आया। अभी भी हम 16,480 के नीचे हैं। फॉर एन अप मूव अगेन इट नीड्स टू क्रॉस 16,480 and then move higher towards 16,860। जब तक अरीमा के नीचे है we will not be buying, we'll be looking to sell on rise। यहाँ पे 7 इसके ऊपर चले जाती है तो then there is no use to carry shorts, but again right now I here it has at a support। अगर ये 16,250 का सपोर्ट तोड़ देती है तो नेक्स्ट स्टॉप इज 16,000, उसके नीचे 15,700, ये दो नीचे के सिनारियोज हैं। सो आप देखिए 16,480 और 250 के बीच में है मार्केट। सो वी हैव टू ट्रेड्स दैट वी कैन टेक अबव 16,480, 16,860 के टारगेट के साथ वी कैन सी। 16,250 के नीचे जाती है तो 16,000, 15,700 के तक के टारगेट्स हम ले सकते हैं। In between will it's choppy, you see between these two ranges this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 bars have already been in this range, so let's wait for this range to complete. But the targets that were given here in the beginning of May have already been achieved. As I said, two scenarios: above 480 we go long, below 250 I'll go short. This is how I am seeing it. These are the targets for the downside. Long term or medium term, not long term but medium term, only above this I'll be bullish. Under it, I'll keep on buying on where my probability zones are. Keep booking here and keep taking shots. Keep booking here, keep taking shots. यहाँ इसके नीचे I'll another puts or take a shot for this, and yeah, overall short term, medium term, we are in a bearish territory. These are two areas where I'll be looking at to go long or short. This is for Nifty. Moving on. This is Bank Nifty again, 35,500. I told you multiple times 35,500 is a great place, great support area. मार्केट ने एक बार ट्राई किया, इट ट्राई 2000 पॉइंट रैली, वहाँ पे हमने बुक किया था। टेलीग्राम चैनल पे भी आई पोस्टेड कि आई हैव बुक्ड एट दिस 1000 पॉइंट गेन। फिर अभी आई हैव अब 35,300 के नीचे गया, 35,150 was the first target, 34,450 was the next target, both posted on Telegram and on Twitter. अब यहाँ क्या हुआ है, this is also a channel, it's in a channel, उसमें आप flag भी कह सकते हैं on a larger, if you have more bars in the structure then this might look as a flag. So 1 2 3 4 4, so how it is looking, 3 bars, उसके बाद दो तीसरी बार के पास बाउंस आया, दो बड़ी बार्स सेल की, बाउंस आया, एक दो तीन बड़ी बार्स। पर अगर आप देखें तो अभी सेलिंग थोड़ी सी 1 2 3 4 बार्स में रुकी हुई है, ज़्यादा सेलिंग नहीं थी लास्ट 4 बार्स में ऑन फ्राइडे। दैट मीन्स दैट someone is not willing to, there's some buying or someone is not willing to go short here or any short that is, so it's in a अभी ब्रेकअप, हमें अप मूव नहीं कह रहा है यहाँ पे, बट द थिंग इज दैट इट्स इन अ रेंज हियर, बट इफ यू सी सेलिंग देयर इज नो बाइंग इज वेल, बट द सेलिंग का फ्लो जो है वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। यूजुअली यहाँ पे 1 2 3 4 बार्स में 1 2 3 4 बार्स के बाद sell off came, 2 bars के बाद sell off came, we are already at 3, so it will be interesting to see on Monday how we open. It can go to 35,150 on the top of the channel. It's not very bearish from here,
इट लुक्स लाइक स्टोकेस्टिक गिर रहा है और अभी बिल्कुल लोअर एंड पे है, जहाँ से फॉल शुरू हुई है इस चार्ट के अंदर। सो आप देखिए स्टोकेस्टिक हाई पे था, अब फर्स्ट टाइम इस चार्ट में यहाँ पे लो एंड पे है। अप्रैल के बाद फुल 1 month they were we are in a downtrend. May we are in somewhat middle of May coming, so uh, here we are at the lower end of the range. I'm again not saying right now that the trend will change and we go bullish, but there can be a relief rally of say 34.5, first of all to 35.150, and then towards 34.950 एक लेवल है जो मैंने मेंशन यहाँ नहीं किया। 34.950 के ऊपर मैं बुलिश होऊंगा, वो एक सुपर गामा लेवल है। 34.950 के ऊपर मैं बुलिश होऊंगा, या 35.150 का टारगेट, उसके बाद ये चैनल का टॉप। शॉर्ट लेना यहाँ थोड़ा सा टफ है, लेट्स सी क्या ओपन होता है। अगर लो टूट जाता है फ्राइडे का तो मे बी शॉर्ट कैन बी ओपन फॉर अ फ्यू पॉइंट्स, बट वी आर इन द लोअर एंड ऑफ अ चैनल। स्टोकेस्टिक लोअर एंड पे है, सपोर्ट है, दिस 450 इज सपोर्ट एरिया बेस्ड ऑन रीमा, एंड सो इट कैन सो अगर बाय का प्ले आता है तो आप रिलीफ रैली के लिए 1000 पॉइंट तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 800 to 1000 पॉइंट ऑन बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन कैन बी एक्सपेक्टेड। Now we talk about S&P 500. S&P 500 again, I posted these levels 4090, 4010. मार्केट ने एक बार 4090 को एक बार टच किया, went to 4300 Fed announcement में, next day it gave up all its gain, and now they are very interesting bars, this one and this one. So I can't show, I don't have the video right now with me, but huge buying around, and huge selling and buying, sorry my cursor, in these two bar huge buying and selling came, and then market stabilized and closed at 4170. Not the best place to close, to be honest, but not that bad as well sentiment के हिसाब से। 4150-60 के ऊपर close होता है would have been bullish, really bullish, but as I'll wait for tomorrow open, if it crosses over 4550 to 65 range, then bullish towards 4300 again। लोअर एंड 4090 टूटता है तो 4010 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जिस पे शायद ड्यू टू सम रीजन कल गैप डाउन ओपनिंग हो और हम 4010 से बाउंस करें, दैट इज ऑल्सो 4165 के ऊपर इट इज़ अ गुड प्लेस टू गो लॉन्ग। 4010 एज वेल इज अ गुड प्लेस टू गो लॉन्ग। 4090 के नीचे शॉर्ट है 4010 के लिए 80 पॉइंट्स के लिए। स्टोकेस्टिक अगर आप देखें पिछले दोनों बाउंसेस में ये यहाँ पे it wasn't able to go beyond a point. There are reasons for that as well, but this time it went up. Usually, I won't say usually, but I've seen at times जब stochastic first time ये ओवरबॉट, एक बेरिश ट्रेंड के अंदर ओवरबॉट होता है फर्स्ट टाइम आफ्टर, like if you see this 1 2 3, then it sometimes signal a start of a new move. This is in my experience. So let's see how that goes. So in the past 1 2 times it's not able to, this time उसका रीजन ये बार भी है, ये वाली बार, और ये दो बार इसको नीचे भी ले गई, but usually it is a start of some sort of a new move. पर अभी 41 650 65 की range we have to watch out. अभी I'm not saying that it will go to all time high and stuff like that, I'm not talking that, but step by step 4090 4165 50 के ऊपर will go to 4300, इसके नीचे 4010, and then maybe 4010 से 4300, it has to cross this green line. When it crosses, then we'll see for a newer rally. I am long in this zone, I'll buy more around here and I'll be exiting around here, and then see again if it's giving a bounce, then I'll see, otherwise that's the trade for me right now. एक यूनिक सा पैटर्न मुझे नज़र आया, सो आई थॉट आई शेयर विद यू। वो पैटर्न ये है कि ये S&P 500 ही है। सो पिछली 3 फॉल्स के बाद जब राइजेस आए तो ये आप देखें, ये एक पैटर्न बनता है, डबल बॉटम भी बनता है और डबल टॉप भी बनता है, विच इज़ रेयर। यूजुअली इट्स डबल टॉप और डबल बॉटम एंड देन मार्केट, either of this one and then markets। पर यहाँ पे दोनों में अगर आप ये वाली रैली देखें, दोनों तीनों स्क्वायर्स के अंदर, ये रेक्टेंगल है दो, so I'm not going into
geometry thing. But if you see this, this is where two double tops, double bottom, breakout up. ये डबल बॉटम डबल टॉप ये और ये एंड देन इट ब्रोक आउट. अभी भी सेम है. ये डबल टॉप हो चुका है, डबल बॉटम भी हो चुका है. सो अगर आप देखिए जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों कंप्लीट हो गए हैं, तो it can rally towards this and then move higher. We'll see if this pattern plays out. It doesn't mean ये ऐसा ही चलेगा. It was just I saw this, so I thought like it's good to share. So ये डबल बॉटम है, ये डबल टॉप है. अगर हम यहाँ अभी हम यहाँ खड़े हैं, जो इस रैली का यहाँ था, और अभी हम यहाँ खड़े हैं इस रैली का जहाँ मेरा कर्सर है, एक दो दोनों टाइम इसने ब्रेकआउट किया है. दोनों टाइम इसने ब्रेकआउट किया है. एक डिफरेंस है बस जो इस ये तीनों में इसमें नहीं है, वो ये है कि इससे पहले एक बहुत बड़ी डाउन मूव के बाद कंसोलिडेशन के बाद बनता है. यहाँ पे भी एक बड़ी मूव के बाद कंसोलिडेशन में बनता है. यहाँ भी ये वाली मूव ऐसी मूव नहीं है. But anyway, this is how it looks. I thought it was interesting, so it was good to share. So based on this, we can expect अगर ये play out same तरह से होता है, तो next is towards this high double top की तरफ and then break out, and maybe it can stop here and come down again, or it can move higher. That we don't know, and we'll see with time क्या होता है. Nasdaq completely beaten down 15,200 से अभी 12,600. अगेन सेम सा पैटर्न है इसमें भी जैसे S&P 500 पे था. स्टोकेस्टिक भी आप देखें, अगर मैंने सेम उसी तरह की लाइन लगाई है यहाँ पे. यू सी स्टोकेस्टिक इट्स एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज एंड देन it went higher and then came down. 12,600 is a place where I think I am personally long, and again I expect above this range here, these bars, if it's able to cross above this, then first of all the target is the down sloping trend line, and if not, then if crosses this, then we'll see. For the time being, this is the buy support area, and this one above this, again this line will be a target. But here, and stochastic is at the lower end of the range. Every time it comes lower, there's some sort of rally, large or small, we'll see. Like here it is at the lower end, there's some sort of rally, at the lower end some sort of rally, and so every time it goes, agar yahan dekhein this place, there's rally. Although after that, because the trend is bearish, the overall trend is bearish, so it's a sell on rise market. But when you come at a support area, you can take a long with a small stop loss, and that can be a good trade. That can be a 3x 4x 5x trade on options, so that kind of a trades we can take. Back to the Indian indices, Nifty Pharma. If you remember the chart that I posted of Nifty metals, this is something of the same. For initially it looked like a channel, but it didn't break out of this line. More of a wedge ending diagonal kind of a thing. So it broke down large moves. If you see here, now we closed at a doji, and this is a support area, major support area, and from here it has closed here. So if you see that, this is a doji. A doji doesn't mean that always the trend will reverse. I mean, tomorrow if it gaps down below it, then the trend will continue towards 12,200 level. But it has beaten down quite a bit, so there can be some sort of relief rally, and maybe again after that it makes a new low. We don't know. If you see what happened when previously the doji bani hai, what has happened there. So here it has, yeah, where my cursor is, this has happened, big fall, big large fall, and then then a doji. This one has a gap here, this one has a gap, this doesn't has a gap, but then it went higher. Another doji, another large move. So in this chart I can just find this on the lower side, maybe this one, but this is very long tailed. I don't like the long tailed ones like this one, but it's this is here when the doji was made, it's the end of the up move and a large down move came. So yeah, so something to watch out here as well. There's a doji, and so this can be a trend reversal. Pharma has been beaten up quite a bit. Looking at stocks like Aurobindo Pharma,
Dr. Reddy's has taken quite a beating. Both of these, Alchem, although very volatile stock and sometimes go to sleep for days, but Alchem, Dr. Reddy, and Aurobindo Pharma is the one that I track. Maybe Cipla as well. I haven't seen the chart for a while. I exited Cipla above 900. I think I haven't seen it after that. So I don't know where it is. So maybe if that is beaten up, you can look at that. So uh, again, it's can be a reversal candidate. Uh, abhi move. We have not got the signal to enter yet, but it's early signs that there can be a reversal. So something, an index to watch out for. आईटी इंडेक्स लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो बात की थी तो ये था कि ये इस बार पे थी आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 days यहाँ पे बात की थी तो एक्सपेक्टेड no I think we last time we talked here on this bar after this hammer this and then I said this is an outside bar but hasn't broken the range. Next day it opened lower, another low. IT index में I told you one thing that it can make newer lows, which it did from here to here and then here, but the selling now is not that strong, which it was like here. You see, selling now, if you see, it is, as I said, closed at the low, closed at the low, nearly at the low, closed at the low, closed at nearly the low, large bar closed nearly at the low, then now closed at the low, closed at the low. Here, from here on, there is some sort of buying you can see. Again, closed at the low, at the low, at the low. Again, we see here some sort of a buying here. And it's a good hammer. This one as well was good, but after 2 days it gave its gain away. So we have to see another 1 or 2 days in this. One difference जो मुझे अब इसमें आपको it's the equality part. Fibonacci 1 exactly 1 पे इसने support लिया और वहां से bounce किया है. अगर ये low hold करता है, we can see some good days in IT. IT में कुछ अच्छे दिन देखे जा सकते हैं अगर ये low hold करता है. So very important for this to happiest mind started, although not part of the IT index. Happiest mind ने start किया अपनी up move, LTI LTTS some sort of move started. Not very good, बहुत बढ़िया नहीं, but कुछ move नजर आई buying नीचे से. They have been beaten up quite a bit. TCS इतना as compared to other stocks, TCS इतना नहीं गिरा, so that can be a leader if there is some sort of a rally in IT. Again, not saying that it will be start of a new bull run. It is more like इसमें आप कह सकते हैं कि एक the term dead cat bounce or something like that can come, because for a larger up move stocks need to or indexes need to work थोड़ा देर कंसोलिडेट करने की करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप ये अब ये चार्ट में बहुत सारे बार्स नहीं है, आई थिंक ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम 2022. सो अगर इसने जब डाउन मूव लेना था तो इसने एक मूव लिया. जो ट्रेंड था आप ये देखें यहाँ पे अच्छा अप मूव है, अच्छा अप मूव है, अच्छा अप मूव है, बट यहाँ आके डॉजीज बढ़ गई, रेंजेस छोटी हो गई, तो उससे क्या हुआ कि रिवर्सल के चांसेस बढ़ गए. सेम एनालॉजी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, तो इसका मतलब there is a chance that can be a reversal. What can happen is that 2 3 4 5 days it might not move. ऐसी ये वाली ऐसी बार 1 2 3 4 5 इन बार्स के अंदर ऐसा मूव यहाँ आए, एक सिनारियो ये है, और हम until the time ये 1 वाला लेवल होल्ड करता है तो इसके बाद हम इसके ऊपर कंसोलिडेट करके जाएं. अगर हम एकदम चले जाते हैं तो वहाँ सेलिंग काफ़ी आती है. So you have to be just an experience I'm sharing with you. If there's a large move next day, then usually it gets a lot of sellers, but if it after consolidation वो आती है तो उसकी वहाँ पे सेलिंग, जब बाइंग आती है तो उसकी वो मूव अच्छी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है. So something to keep a note of. So I talked about Wipro, beautiful structure. यहाँ से सेल शुरू हुआ, इसका बहुत अच्छा सेल दिया. स्टोकेस्टिक पे ओवरबॉट था, सेल दिया. यहाँ पे tried to bounce, stochastic already overbought पे था, so just it was a little, from here till here यहाँ पे overbought हो गया. So there was यहाँ पे इसलिए एक दो false breakout रिबन के ऊपर, बट अगर आप ये फर्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर आपने क्रॉस नहीं कर पाया,
ये एनर्जी कॉइल में फंस के नीचे यहाँ से broke down from, and then since then it has been falling. So 575 से लेके 485 90 पॉइंट की मूव, यहाँ पे 675 से लेके 520 150 ऑड पॉइंट्स की मूव, बिन गुड मूव्स इन विप्रो। अब ये यहाँ पे 478 टू 481 की जो रेंज है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है इसके लिए। स्टोकेस्टिक लोअर एंड पे है, पर एक काफी देर से लोअर एंड में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस एज वेल कि वी शुडंट जस्ट बाय बिकॉज ऑसिलेटर, तभी मैं ज्यादा ऑसिलेटर्स यूज नहीं करता। यू माइट हैव सीन इट दैट आई in my tweets I just look at price more, and I teach this as well. Oscillators I use just for extra decision making structure, उसके beyond नहीं मैं यूज करता। तो इसमें क्या है कि आपने देखा ये लोअर लोज, पर यहाँ से ये अराउंड 550 ऑड लेवल से ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है काफी देर से। सो अगर आपने यहाँ लिया होता तो अभी आप 40 पॉइंट्स के लॉस में होते। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव, बिकॉज ऑसिलेटर्स की लिमिट है। दैट इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम विद ऑसिलेटर्स इज दे हैव अ लिमिट। अब यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, तो अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप सेल करते रहते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप सेल करते, तो आप इसको रिबन को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए। तो if you sell around here, you'll get multiple stops, they'll stop out. So just don't look at oscillator for the sake of ki it's not a buying and selling mechanism, it's an added structure for you. कभी कभी वर्क भी कर जाता है, I'm not saying that it कभी भी नहीं वर्क करता, but इन सिनारियोज के अंदर जब ये होगा तो आप स्टॉप आउट हो गए बहुत टाइम, ये भी स्टॉप आउट होंगे काफी टाइम। सो बिकॉज इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, तो ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि ये इसके ऊपर ही नहीं जा पाता, ओवरसोल्ड एरिया के ऊपर ही नहीं जा पाया। यहाँ ट्रेंड स्ट्रांग था, तो यह इस जगह से ये नीचे नहीं गया, जिस वक्त नीचे गया ट्रेंड बदल गया। So there are multiple ways. I'll maybe next few weeks I'll be uh, just for the subscribers of this channel, I'll be giving a knowledge series कि oscillators को use कैसे करना है। Next week maybe I'll be posting a video subscribers only. So if you haven't subscribed, you can subscribe to the channel कि how to use volatility on charts. So not mathematics wise, but on the charts how you use it. This is what we are going to do. So moving on, this is what how Wipro looks like. The next one is LTI. LTI, it's been falling based on various reasons which we are not going to discuss. But if you see from the start, अच्छा move है यहाँ से, रिबन ने अच्छा move दिया। Again, जिस दिन जब सेल शुरू हुआ, यहाँ से सेल, अच्छा सेल आया, एक फॉल्स ब्रेकआउट, ये फॉल्स ब्रेकआउट दो हैं। इसके ऊपर इसको नहीं मैं मानूंगा because I'll buy only above this because it's very close. Anyway, even if it these two and then finally it fell down. यहाँ पे stochastic भी उतना strong नहीं था इसकी move के बाद भी. So a multiple signals. If you, this is for full on technical analysis. Uh, if you want to be better at it, it's not just about reading books. It's about practicing it in real life, and ask. You can ask me any questions on technical analysis if you wish to, in the comment section as well, and I'll try to answer it. Or you guys can DM me on Twitter if you follow me on Twitter. So coming back to this, so 4470 for me is a very strong support area. Currently it's 4593. Touched it, went up, closed हायर। अगर आईटी इंडेक्स बाउंस करेगा तो ये भी आईटी स्टॉक्स के साथ ये भी बाउंस करेगा। बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, दैट डजंट मीन अगेन कि अभी बहुत ज़्यादा बीटन आउट है तो वील बाय इट। सुजलॉन स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक few thousands and ended up in single digit JP as well. तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि बहुत बीटन डाउन है इसलिए हम बाय करेंगे। बट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में स्टोकेस्टिक एज आई सेड is at lower end of the range. यहाँ से जब अगर हमें एक buy signal मिलता है, if we get a buy signal here, we can get on. I am looking for 5100 levels. Maybe if it gets really bullish, maybe 5500. But 5100 is where I'll be booking my positions. So it's right now 4600. 500 point move can come 10% pretty easily.
uh, because you see, if you see, it has beaten down from 7500 or to 4500. So a 3000 point के अंदर एक 500 point की up move, it's not a big deal. Will that change it, anything in it? No. Will that make it bullish? No. Bullish only, I think it has to do more work. By experience, I'm saying it needs to work around here on this range for a few days, 2 weeks, maybe a couple of months, and then maybe start its upward journey if it wants to. It can break 4470 and come to 4000 as well. We don't know it. अभी के लिए higher probability trade है कि यहाँ से we can see a bounce on this trade, and then we can see 52 5100 levels. This is my area where I like to book. I think at 5500 51 5200 will be again at high end of stochastic. uh, so yeah, this is the plan here. If it moves, start maximum move अभी तो रिबन के पास ही लगती है, जो बहुत दूर है 1000 point away, which unlikely right now. So if it bounce comes for 5000 to 5100 is a place to book your profits if you are long from these levels. Next one is Reliance. Reliance has been a beautiful structure for and I've been in the अगर आप past की videos भी देखें, if you see the past videos, this was the first place where I on the first video, whichever one was week chapter 3 or maybe I guess chapter 3, maybe chapter 3, I guess. Yes, from the first time when I made a video, it was here, and I was like, I don't like, it's overstretched. So after that the sell came, and again then this was my second area also mentioned in the same video. So ये मैंने अभी नहीं डाला, 2830 2840 रेंज के अंदर ये वीडियो ये भी मैंने डाला था. यहाँ पे एग्जैक्ट ये इसने रेजिस्टेंस ली, short positions. I told you guys you can have a short with a 20 points or some small stop loss. Stochastic was at a high end of the range. That was another reason, but stochastic has been high for a long period of time. So that's why, again, not the only thing you should use to take a decision. So यहाँ पे there was a short and now it is back to ribbon. पिछली बार इसने क्या किया, रिबन के पास आया है, इस चार्ट के अंदर ये विजिबल नहीं, यहाँ पे भी took a supported ribbon, made a bounce, took a supported ribbon, made a bounce. अब भी it's one of the strongest stock. Last 3 ये candle bullish है मेरे लिए. Others might feel differently. This is bullish candle. These two are, this is a bearish bar. This is, I won't say bullish, but a neutral to bullish, and this is a doji. So there's some buying coming in here. As I said, I heard the numbers are good. So if the numbers are good, then you can expect this to cross over 2640. I am looking right now, based on how overall market is, a bounce towards 2750 2760 range यहाँ पे इस side, and above that we'll see, wait and watch है, market overall trend change होता है तो शायद, पर अभी तक तो we'll play. कल I don't know where the open will be, but uh, I texted the Reliance can be savior. I tweeted about it, and I posted on Friday कि this is a buy area now. It's coming to a buy area, and that was the target. Target actually में 2720 2730 था, but it came even lower towards the ribbon. Till the time it's above the ribbon, that's a 2560. Then it's a good long. It has been a leader, but अब market के साथ ये भी it has come down. So if it crosses 2640, or tomorrow if we get a chance, I don't know how market reacts to numbers. My market might react negatively to the numbers as well. अब आजकल तो यही हो रहा है. Good numbers get punished. So yeah, I mean, this is what 20, this is Reliance, how is Reliance is looking, and till now it has worked great. So 2750 2760 रेंज में टारगेट बना ये है इस मूव का. अगर यहाँ से ऊपर जाता है 2640 क्रॉस करता है, 2560 का स्टॉप लॉस के साथ it can be played. I don't have a position in Reliance presently. So yeah, I mean, this is the, I took some shorts here, booked around 2720. I took longs here, and I didn't short here, but short here. But so yeah, I think I shorted here as well. I forgot. I'm not sure. But this one is a place where it looks healthy as compared to many other stocks. So one stock to watch out for. Again, Reliance, this how it is looking through market geometry. All these lines are way in advance. This is not that I've
drawn it now. I have posted the chart multiple times as well. So यहाँ से support area था, bounce किया, uh, इधर दो resistance cross किया, ये resistance cross किया and new territory के अंदर जाके it made a flag pattern. यहाँ पे इसने इस जोन में इसने रिवर्सल लिया, टारगेट ये था। ये पिछली बार भी इसी एरिया में इसको मिली थी रेजिस्टेंस, इस बार इससे थोड़ी सी ऊपर रेजिस्टेंस मिली, बट बोथ द एरियाज वर मार्क्ड बिफोर, इन नए एरियाज नहीं है। अब ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, यहाँ से इसकी डॉजी है, डेली बार है, यहाँ से ही sort of a dodgy है, not exact dodgy but sort of a dodgy। तो यहाँ से it can bounce back towards, ये तो this is saying around this area towards the previous high level, but we'll see। I am in a middle territory wise 2750-60 शायद यहाँ तक, but we'll wait and watch। But this is a buy area based on market geometry as well, based on Rima as well, it's a buy area based on market geometry as well, this is a buy area। So that's a shorter term, I think 1 hour previous, this chart is a 1 hour bar and this chart is a daily bar. Daily is looking strong as well, and so yeah, Reliance can be, if there's a rally from here, any sort of rally, Reliance can lead it. So let's see if that happens. ITC as well, same old chart, nothing has changed. Again, I am putting this chart only because of this bar, the last bar, which was very bullish on a bearish day, sort of a bearish day. I won't say sort of, but environment is bearish. So on that day as well, ITC was able to make a close at a higher end of the day। फ्लैग के बाद ब्रेकआउट 254 पे recommended to buy, since then it hasn't seen that level and now it's trying to make a new movement। slow है but better, because you might argue कि flag के बाद breakout should be good, but yes, but you have to look at overall market structure as well। overall Nifty is in a bearish territory, but this, after the flag breakout, this one is still holding its gain। Based on how Nifty is moving, this could have come around here, but it's holding its gain, means it is getting ready for a new rally। So I wouldn't be surprised to see 270 272 this week, and maybe around 280 290 in the next week। So yeah, so this one is one to watch out as well। uh, ITC, uh, it's a bullish stock right now and can even extend its gains in the coming week। So that's it for me। If you like this video, give it a like, and if you're not subscribed to the channel, do subscribe it। There will be a lot of videos coming up, knowledge based videos as well, and the Outlook series will continue। There's a new series coming up based on knowledge base। My Twitter handle is mentioned there, and the Telegram channel, if you haven't been is a if you are not part of Telegram channel, you can become a part of that as well। I post my videos, I'm not able to make more than one a week right now because I trade almost all the markets in the world, all the asset classes, that is, I trade US markets as well, and crude oil and other commodities, so it takes a lot of time. So I just get time on Saturday or Sunday to make or post a video. So in between, whatever trades I do or whatever commentary I want to post, I post it on Twitter or Telegram channel. So with the YouTube channel, you can subscribe to that. And I wish you guys a happy trading week ahead, and we'll try to meet again next week. Good luck with everything and have a nice day.